presentation about essential component of a lesson plan. First of all, we know about what is a lesson plan. A lesson plan is detailed description of the instructional strategy and learning activities to be performed during the teaching learning process. And we can also say that it is basically a guide which helps execute a mission that is to be accomplished in the classroom with the children. That means we can compare the lesson plan as a map which guide us to how to present ourselves in classroom to explain whatever topic is dealing at that time. Students can understand that topic very well. So it is like a roadmap, or we can say that it is like a guide which help the teachers very well, so that they can schedule the time as well as their topic and everything which teachers can explain very well to the student. Now come to the point need and importance of lesson plan. First need is effective teaching. Effective teaching means clear, articulate, high achievable and purposeful. Means that student receive timely and sustainedly, means student receive this timely and give the feedback appropriately. It allows student to advance their knowledge of skill. Second point is self-confidence. Whenever we present ourselves, we enter the classroom, then we have to self-confident. Trust, because when we self-confident, then that means trust ourselves, bring attitude. जब भी हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे होते हैं तो हमें 100% उस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए that we can deal very clearly. Next is previous knowledge. When we खत्म हो गया उसको चूसा कर लेता तो अपने कनेक्ट चाहिए
इसका वाईफाई है चलने खोज रहा है तो इसका भी लिंक सही नहीं प्रॉपर मिल रहा है। तो मोबाइल से कनेक्ट कर दो इसको, 1 घंटा हो जाएगा। ऐसे कनेक्ट हो जाए तो आपका मोबाइल होस्ट है ना, यहाँ लगेगा पानी सर का बोलने से समझते थोड़े कुछ लिंक लिंक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा तो ये सभी नंबर कैसे होंगे। करें स्टार्ट। Now come to the point, need and importance of lesson plan. First is the effective teaching. Teaching must be effective, and effective when we clear our topic very clearly and the student getting every point clearly. It allows student to advance their knowledge or skill. Second is self-confidence. Whenever teacher enter the class, the attitude like the self-confidence, and self-confidence comes to the teacher at that time when they can trust themselves. Next is previous knowledge. When we going to teach any topic, then we have to collect the previous knowledge about that topic, so that we can clear the concept of the students. Next is maximize utilization of time. We have to schedule every point according to the time. That's why we can utilize the time maximum. Next is pre-appearance of the problem and difficulties. We have to pre-appearance means हमें पहले से अंदाजा लगा लेना है कि प्रॉब्लम क्या आने वाला है, डिफिकल्टीज क्या आने वाले हैं, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सबकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो हमें उन्हें कैसे उनको संभालना है, कैसे उनकी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को सॉल्व करना है, ये हमें पहले से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स शामिल करने चाहिए ताकि हम लोग समय के साथ में हमें बच्चों को जो भी आउटपुट, जो इनपुट देना है, वो बच्चे में वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटेशन। हमें लिमिटेशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशंस है। जैसे किसी एक बच्चे जब हम इंटर करें क्लास में, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं करना है, हमें सारे स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअली फोकस करना है, ताकि हर एक बच्चे को हम लोग अच्छे से समझ सके कि उन्होंने हमारे पॉइंट्स को अच्छे से लिया है या नहीं, अच्छे से समझा है या नहीं। हमें ज़्यादा लाउडली नहीं बोलना है, किसी को ज़्यादा डांटना नहीं है। वो अगर पूछते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से, तो हमें उन्हें दोबारा बताना चाहिए। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एबिलिटी। हमें हर एक चीज़ जो है वो सीक्वेंस मैटर में सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लान। फर्स्ट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज।
हर एक बच्चे में अलग अलग समझने की कैपेबिलिटीज होती है। कुछ बच्चे को मान लीजिए कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है या फिर अदर लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है, तो हमें ऐसे वर्ड या ऐसे भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ सकें। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट जनरली अगर मान लीजिए आप किसी भी टाइम में आपको भेजा जा रहा है, तो ज़्यादातर अगर हम मैथ्स के टीचर हैं और हमें जीके पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, तो हमें हर एक सब्जेक्ट का एक जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा गोल है, क्या हम आज अचीव करने वाले हैं, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज एसेंशियल। जनरल हर एक सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज जरूरी से पता होना चाहिए। चाहे हम अगर जूनियर क्लासेस में जा रहे हों, तो हमें हो सकता है कि कोई भी सब्जेक्ट लेना पड़ जाए, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में हमें जरूरी जानकारी पता होनी चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी इन लेसन प्लान। लेसन प्लान में फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर हम एक बार लेसन प्लान को क्रिएट कर लिए और हम जब क्लास में इनके और हम रिकॉल कर रहे हैं फिर से, तो मान लीजिए कि बच्चे को उसके बारे में वो अच्छे से नहीं उसको समझ पाया है, तो हमें उस लेसन प्लान को कस्टमाइज करना चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी लानी चाहिए। हमें रूट नहीं होनी चाहिए कि आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं बस उसी टॉपिक पे हम आगे चलें। हो सकता है कि हमें उसमें फेरबदल करना पड़े, हमको फिर से प्रीवियस क्लासेस के बारे में पढ़ाना पड़े, तो लेसन प्लान में फ्लैक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर नॉलेज ऑफ टाइम। टाइम का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल का भी हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। टीचिंग मटेरियल में हमें बहुत सारी सामग्री हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनको हम शामिल कर सकते हैं ताकि हम बच्चे को उस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी दे सकें। डिवीजन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को एक समय में हम सोचे कि एक चैप्टर को एक ही समय में खत्म कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनको यूनिट्स वाइज पढ़ाना चाहिए, उनमें डिवीजन करनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी अबाउट प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी साफ जानकारी हमें होनी चाहिए। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, components of effective lesson plan. I make this presentation and I put them 11 components of a effective lesson plan. First is necessary material. Necessary materials we have to gather when we go to the classroom to teach any topic or any lesson, any chapter. Then we have to gather all materials that we can deal that time. This includes student supply as well as your own. Material may be line paper, pencil, ruler, conversion sheets, document, camera, poster, laptop. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, पपेट शो, कोई मान लीजिए कि समाज में कुछ मैसेज देने का प्रोग्राम चल रहा है और हम उसे देखने जाते हैं, जैसे पपेट शो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो पपेट शो में क्या है, अगर आपको वो कहानी बता रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं और पपेट ही ना यूज़ करें, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितना हमें वो मैसेज मिलना चाहिए वो मैसेज हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जब भी किसी टॉपिक को डील करना है, स्टूडेंट को प्रॉपर समझाना है, तो हमें प्रॉपर उस मटेरियल का यूज़ करना चाहिए और वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। एवरीथिंग गोइंग वेरी, जब कभी भी हम मटेरियल यूज़ करेंगे, व्हेनेवर वी यूज़ दैट मटेरियल, देन द क्लासरूम इज आवर क्लासरूम इज गोइंग वेरी स्मूथली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस and we can more devoutly explain about that topic. For example, whenever when we go to the math class in the junior classes, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 2D 3D शेप्स पढ़ाने के लिए गई थी, ठीक है, छोटे बच्चे को, तो मैंने 2D शेप्स 3D शेप्स पढ़ाने के लिए अपने साइंस टीचर से ग्लोब ले लिया। आप बॉल इकट्ठा कर सकते हैं स्फीयर दिखाने के लिए, है ना। क्यूब आपको दिखाना है तो आप चौक का बॉक्स दिखा सकते हैं, ठीक है, डाइस दिखा सकते हैं, ताकि
ताकि बच्चे उसको प्रॉपर देख के ज़्यादा अच्छे से समझे। जब कभी हम किसी टॉपिक को डील कर रहे होते हैं तो सुनने से ज़्यादा अच्छा समझ, जब देखते हैं किसी भी चीज़ को तो ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग क्या उसमें ढल जाना चाहिए और वो प्रॉपर मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो उस समय पॉसिबल हो। नेक्स्ट इज क्लियर ऑब्जेक्टिव। स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और हमारा डिजायर्ड आउटकम क्या होगा बच्चे को लेकर। हम आज बच्चे को क्या देने वाले हैं, बच्चे आज क्या हमसे नया सीखने वाले हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे और हमारे हर एक स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर एक भी बच्चा छूट जाता है, नहीं समझ पा रहा, तो यानी कि एट दैट टाइम आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड। For example, doing well, you next come in is not जैसे कि हम मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि doing well on your next exam, that is not specific, okay? Clear objective में क्या है कि आपको smartly इसको हैंडल करना। Smart stands for specific, measurable, achievable, relevant and time bound. स्पेसिफिक मीन्स हमारा जो एम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। माई स्क्रीन इज शेयर्ड, माई स्क्रीन इज शेयर्ड और नॉट? Not audible. My screen is shared. Now I am audible. Now my next topic is clear objective. तो जो कुछ भी हमें बताना है, जो हमारा एम है, जो गोल है उस टाइम का, वो स्मार्टली हमें हैंडल करना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। First, we deal with specific point. Specific means when we say that doing well on your next exam, it is not specific, but we can say that you have to score 90% in the next exam. That is the specific. Measurable. Score at least 90%, it is a measurable, but doing well your next exam, not measurable. No clear way to define success or failure. Now next is achievable. How 90% we can score? So we have to make a plan, taking notes in classroom from the other student, spend 30 minutes 3 nights week per studying,
parenting with friends to review. So that's are the plan to we may follow to achieve the 90% in our next exam. Next is relevant. Does it keep me on track? Whenever we say that, when we make the plan to achieve that goal, then we have to decide that plan is relevant or not. Does it keep me on track for other goals in my life? Does this goal align with my long term objective? If yes, then that plan is relevant. Next is time bound. What is time bound? When we decide that I have to score 90% in next exam, but we not plan any no I we cannot follow any criteria, and the time bound is finished. When we have to make a plan and follow that plan, we हम लोग ने उसे क्या किया, जाने दिया, ठीक है, टाइम पे हमने उन्हें क्या किया, प्रिपरेशन नहीं किया, तो ये हमारा स्पेसिफिक टाइम बाउंड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम हमारा विद इन 3 वीक्स होने वाला था और वो 3 वीक्स के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना चाहिए था, वो टाइम तो हमारा चला गया. अब बाद में अगर हम सोचेंगे कि हमें अब हमें करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो कुछ भी हमें आपको जो प्लान है और जो एग्जीक्यूट करना है, वो आपका टाइमली होना चाहिए. Next is objective. Objective means goals. What children should be able to do by the end of the lesson or activity. The third component of lesson plan is background knowledge. Set the stage by tapping into your students' background knowledge, previous life experience, prior learning, or both to prepare them for the new concept you are about to introduce. Means we have to activate background knowledge. जब हम कभी जाते हैं क्लास में, बच्चे को कुछ टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें पहले जानकारी ले लेना चाहिए कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ जानकारी है या नहीं. अगर मान लीजिए सपोज दैट कीजिए कि हमें सोशल से रिलेटेड हमें किसी स्तूप के या फिर कुछ स्मारक वगैरह के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना, पहले जानकारी ले लेनी चाहिए. अगर बच्चे कहीं घूमने गए हैं, कहाँ घूमने गए हैं, वे क्या कौन से स्मारक देखे हैं, ठीक है, तो वो अगर वो अपने फीलिंग्स को, अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे, और फिर बाद में जब हम उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से उस टॉपिक को गेन कर पाएंगे. साथ ही साथ कोई बच्चे अगर बुक में इंटरेस्टेड है, बुक में ही लगे हुए हैं, वो क्लास पे उतना इंटरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो जब कभी वो किसी के बताए हुए एक्सपीरियंस को सुनेंगे, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट उस पर ज़्यादा होगा. सो एक्सप्लेन योर शॉर्ट एक्सपीरियंस सो दैट ऑल चिल्ड्रंस जो वो सुन रहे हैं वो सीख सके ज़्यादा अच्छे से. वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इन डिस्कशन. कोई बच्चे अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डिस्कशन में, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना चाहिए. हमारा ध्यान हर एक बच्चे में इंडिविजुअली होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम एक बच्चे पे या 2 बच्चे पे फोकस कर रहे हैं, वो अच्छे से लर्न कर रहे हैं तो हमारा काम हो गया. नहीं, हमें सारे बच्चे पे फोकस करना है. वी मे गेट आवर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. हमें हो सकता है कि उन बैकग्राउंड नॉलेज में उनको ज़्यादा जानकारी देने के लिए, जो वो मान लीजिए कुछ जानकारी है वो भूल चुके हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी यूज़ करना चाहिए. एबिलिटी टू रिलेट द कैरेक्टर्स और प्लॉट. हम लोग उसे प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ बना के दिखा सकते हैं, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हम प्रीवियस मटेरियल्स मैंने जो बताया, उन मटेरियल को यूज़ करके भी उसको हम लोग डील कर सकते हैं. माई नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन. मीन्स फोर्थ component of lesson plan is motivation. Motivation is the most important topic of lesson plan, because when we motivate our children, means that they can good listener and fear नहीं है उनमें, ठीक है. साथ ही साथ they can encourage, we can encourage them more, we can motivate them by tell them story. कोई स्टोरी हम अच्छा सुना के बता सकते हैं,
शो ए पिक्चर, उन्हें कोई पिक्चर दिखा सकते हैं. रीड ए बुक, कोई अच्छा स्टोरी उन्हें बुक पढ़ने के लिए बोल सकते हैं. सो रियल लाइफ आइटम्स. स्मॉल टॉक अबाउट, किसी भी टॉपिक के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन उनसे कर सकते हैं. प्रीवियस टॉपिक को लेके उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि उन्हें कुछ जानकारी है तो वो अपने भावनाओं को व्यक्त करें और हम उनके बदले उनको क्या अप्रिशिएट करें. इंट्रोड्यूस द टॉपिक, उन्हें हम टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करने बोले. तो इन सब को फॉलो करके हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. I am sharing a video. Wait a minute.
Class, pass the test papers down. Yes, luckily I passed. How much did you get? Passed also. Good job. 'Shirley, what happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Pua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. हो गया वीडियो चल रहा था ना अभी तो हम लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ जैसे मार्क्स ही उसको कम लगा तो उनको लेके वो बहुत ही डिस्टर्ब थे। तो हम टीचर्स का ये दायित्व है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और उन पे बेटर कैसे हो, कैसे हम उन पे काम करें कि वो और बेहतर कर सके। ठीक है, तो हम जैसे मार्क्स लिखा हुआ है उसके आगे हम लोग वेल डन, एक स्माइली फेस हम लोग बना दिए। तो इन सब के जरिए हम लोग ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मोर पॉइंट्स टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स।
Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. How much did you get? Passed also. Good job. 59. Shirley? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Bob, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的。每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Bob, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. In this video, we can see that how teachers motivate the children to make the smiley face, so we can take the ideas about to motivate. Some also I have many points to motivate the students. First, be a great listener. Good listener is very important. When we listen carefully, what students tell, want to express, appreciate their feels and thoughts, take proper step to start out the difficulties they are complaining about, so that we can solve that problem. So, be a great listener is very important to motivate the student. Next is ensure fear-free classroom. Fear is the obstacle of learning. So never ever try to impose fear by imposing punishment in our classroom as a punishment, such as give extra assignment when we punished any student. So avoid this step to make the fear student. Next is encourage their thoughts and choices. What are the dislike of every individual students wants to know about them, so that whenever we tell about the choices of the students, they can feel more effective. Next is improve the classroom. Next point is clarify the objective. Objective is
means goal. So whatever we are trying to solve, whatever we can deal the topic, our objective is very clear. कैमरे में क्या नाम है रिजल्ट वाला का? शिव भैया का फोल्डर बनाओ, लेकिन उसमें सारा का नहीं है, क्लास 3 का डिलीट हो गया. Improve the classroom environment. Don't always sit don't sit on your seat to discuss the lesson. Walk beside the students while discussing the lesson. Sometimes take them out to the classroom, take them library for research work. So these kind of steps we can take to improve our classroom environment. Next is share their experience. Some will be busy with books, but when some students will discuss experience related to the lesson, others will be motivated and participate that discussion actively. Positive competition. Next is positive competition. Competition is in positive way. कैसे? We can create the class in 2 group and don't make any points in the competition. We can clap whenever any children give the answer. So in this way we can make the competition in positive way. Next, know your student well. Students teachers को हर एक स्टूडेंट के बारे में पता होनी चाहिए. किस बच्चे में क्या खूबी है, कौन सा बच्चा किस वातावरण से आता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो उनके बारे में और उनका परफॉर्मेंस कैसा है क्लास में, किस किस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, तो ये हम टीचर्स को पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स के बारे में. नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी. We have to give the responsibility and trust every student. When we give the responsibility, they feel encourages themselves. We have to provide them responsibility so that they can feel trust within themselves, will grow and will start believing that they are important since they are getting value from us. Next component is a direct instruction. Direct instruction means straight and forward. In this beginning, when we teach about some topic, what is the today's topic goal, what they teach about, they new thing we can deliver. It is a teaching method that consists of a teacher-driven approach where teacher present the information to the student. In this method, the teacher stands in front of a classroom and present the information. So students can gain that topic very well. Next component is student practice. Student practice is the most important component. In this we have to follow 3 steps. First step is the guided practice. When we give the assessment to the assignment or assessment to the students, they have to be guided. It is an interactive instruction between the teacher and the students. After the teacher introduces new learning, she begins the student practice process by engaging students in similar tasks to what they will complete later in the lesson independently. Next is collaborative practice. इसे हम लोग सहयोगात्मक भी कह सकते हैं, जिसमें सारे बच्चे एक ग्रुप बना के किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हो या फिर किसी क्रियाकलाप को उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपस में क्या करें, सहयोग करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कोशिश करें, ताकि उस वातावरण में उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि उनके भीतर एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो और उस प्रोजेक्ट को वो अच्छे से फुलफिल कर सके. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मीन्स ये हर एक बच्चे को अकेले करना है. गिव द असाइनमेंट लाइक दैट. Component of explicitly thought lesson. Independent practice provide an opportunity for the students to practice the skill or concept from the lesson.
Its purpose is to increase the student fluency. अगर हम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस असेसमेंट नहीं देंगे तो उन्हें खुद के बारे में नॉलेज नहीं होगा, वो उनमें फ्लुएंसी नहीं आएगी. Student gain the free space to do something and show their own talent. तो वो अगर हम we can provide the assessment so that they can judge themselves. What is the potential inside he or she, and what some step have to follow that they can encourage their potential. Next component is technology. Technology पहले के essential component में ये शामिल नहीं था, but in this pandemic COVID-19, technology is the most important part of the essential component. टेक्नोलॉजी अगर बच्चे को गाइडेंस के बिना अगर हम लोग दे सके, क्या है कि हर एक का दो पहलू होता है, अगर उसका कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है. टेक्नोलॉजी अगर हम बच्चे को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो उन्हें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वो क्या हो सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं उसका. इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड स्टैंडर्ड इनटू योर लेसन इफ पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि हम इस चैप्टर में या जो टॉपिक आप पढ़ा रहे उसमें किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ आप उसको दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर में कुछ दिखा सकते हैं या कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर करें. ऑल लेसन डू नॉट हैव टू इंक्लूड टेक्नोलॉजी, बट कभी कभी क्या होता है, हर एक लेसन में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है. In COVID-19 pandemic period, it is the essential part of our teaching learning process. Students and teaching can help the prepare the content. Student can take the help of technology media to prepare the contents. तो इस पेंडेमिक में जो हम टीचर्स का जो एफर्ट है उसके लिए एक वीडियो है, उसे आप लोग जरूर देखें. Dear teachers, last spring you made the shift from face-to-face teaching to pandemic pedagogy. In a matter of days, you found innovative solutions to huge challenges. You designed virtual lessons with limited time and limited resources, and there was no roadmap or blueprint. Now, it wasn't perfect. There were some mistakes along the way. But you were there for your students every single day. You've proven that social distance doesn't have to mean relational distance. Despite the roadblocks, you've built a classroom community on empathy and kindness, where students engage in meaningful collaboration. You've done check-ins and partnered with families. You've helped find resources for students who are struggling. You've experimented with new approaches, and you've taken creative risks. You've continued to learn. You're reading books, watching videos, listening to podcasts, and reading articles. And you're curating content and engaging in professional discussions. You're crafting meaningful lessons that empower students with voice and choice. Like that awesome scavenger hunt, or the maker project, or that blogging project, or the choice menu, or the game-based learning activity you did. Now, 2020 has been hard. We've seen wildfires and natural disasters and an economic downturn. Oh, and apparently murder hornets? Seriously, murder hornets. Meanwhile, teaching is especially challenging right now. It can feel draining when you have a barrage of emails to answer, or when you do a video conference and face a wall of black screens. Some of the social media comments about teachers have been downright toxic. But know this, you are impacting lives. Right now, there's a student who feels known and heard because of you. There's a student who is passionate about learning because of you. There are students who will remember you forever
as someone who was there for them in these dark times. You are changing the world even when you can't see it. So thank you. So technology is very important in this period. Next component is writing. Writing is the essential component of our teaching, essential component of lesson plan. At one time, writing instruction was only completed in a language art classroom. But these days, teachers of all subjects are required wave concept of reading and writing into the contained areas, social studies, science, and even every subject. We have to tell the student what is the criteria we have to follow when we writing any topic, when we elaborating in any topic. So what is the criteria to make the our contents more effective, and how we can write so that we can हम अपना सारा व्यू को रख सकते हैं टीचर के सामने, और सारे कम शब्दों में ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया वी हैव टू फॉलो व्हेन वी राइट एंड व्हेन वी गिव द आंसर. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए लेसन प्लान. नेक्स्ट इज करियर स्किल. अभी के समय में अगर इसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, या बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि करियर स्किल हर एक स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर एक बच्चे को बताना है कि आप में क्या खूबी है, आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं और क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं. पहले से ही ये माइंड सेटअप हो, क्योंकि वो आने वाले समय में इस स्कूल से क्या इस इन्वायरमेंट से निकल के बाहर के इन्वायरमेंट में जाने वाले, तो वो उस बाहर के इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, वहाँ के सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए, उनमें क्या टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, ये उनको पता होना चाहिए. कभी कभी हमें क्या होता है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं. हम उनसे पूछते हैं आप क्या फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हैं, तो मिसगाइड हो जाते हैं क्योंकि वो बचपन से सुनते आते हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं, उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आसपास रहने वाले बड़े बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आपको म्यूजिशियन बनना है. तो वो सुन के वो चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेते कि हाँ हमें, लेकिन वो अपने अंदर के टैलेंट जो उनमें छिपा हुआ है उनको नहीं देख पाते. लेकिन टीचर तो सबके लिए समान है, टीचर सबको को जज कर रहे हैं, तो टीचर को ये पता होता है कि हमारे स्टूडेंट्स में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या पोटेंशियल है. तो हमें क्या करना चाहिए, उनको मिसगाइड होने से बचाना चाहिए. एंड वी हैव टू टेल देम दैट दिस फील्ड इज अप्रोप्रिएट फॉर हिम और हर. वी हैव टू इनहेंस द एबिलिटी, और हमें उनकी एबिलिटी को इनहेंस करने की भी कोशिश करनी चाहिए. और इसके लिए हम लोग मोटिवेशन, जो आपका एसेंशियल कंपोनेंट है, उसे हम लोग इसमें शामिल करें. अबाउट देयर करियर, एंटरप्रेन्योर, क्रिकेटर, तो हम हमारे बच्चे में क्या छिपा हुआ है, हम क्या क्या फील्ड उनके लिए है, वो उनको बताया जा सके. जैसे कंप्यूटर टीचर है, तो कंप्यूटर टीचर में अगर हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप टेस्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप वेब डेवलपर हैं तो वेब डेवलपर के फील्ड में जा सकते हैं, या आप अगर टेस्टिंग का काम अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें एलोबरेट करना चाहिए कि इस फील्ड में भी अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, तो आप में क्या पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में जा सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लाउजर. क्लाउजर मीन्स रैप इट अप. इट इज द लास्ट, वी कैन से दैट लास्ट स्टेप where we wrap up lesson plan or help student organize the information in a meaningful context in their minds. This helps student better understand what they have learned and provides a way in which they can apply it to the world around them. A strong closure can help students better retain information beyond the immediate learning environment.
क्योंकि वो जो पढ़ चुके हैं उनको वो क्या करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट के अनुसार। तो उनमें क्या होता है कि जो वो रिकॉल करते हैं तो उन्हें बेटर समझने की क्षमता बढ़ जाती है और वो रिटेन कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लर्निंग असेसमेंट। A demonstration refers to a wide variety of potential educational presentation or products through which a student demonstrate what they have learned, usually as a way of determining whether and what degree they have achieved expected. A demonstration of learning is typically both a learning experience in itself and a means of evaluating academic progress and achievement. A demonstration of learning may take wide variety of forms in school, such as oral presentation, speeches or spoken word poem, video documentaries, multimedia presentation, audio recording, work of art, illustration, music, drama, dance or program, print or online publication including website or blog, essay, poem, short stories or play, galleries of print, presentation of slideshow and provide summaries of that topic, skill and knowledge students have learned. So this is the some step we can demonstrate from the children. A demonstration of learning assessment evaluates whether or not your student made your lesson objective. Student performance on DOL tells you if you need to go back and reteach the same lesson the following days, or if your students are ready to move on the next lesson, then can you move. Means that when we give the assessment, we tell them that you have to demonstrate about that topic. If they can demonstrate very well, that means वो बहुत अच्छे से उसको समझ गए. Then you have to move to the forward or next lesson. Some extra point that we have to keep things in our mind. First is the follow the children interest. हमेशा हमें चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और नहीं है. बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर हमें अपने लेसन प्लान में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और लेसन प्लान ही नहीं, टीचर्स को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ठीक है, हमेशा एक मूड में नहीं होना चाहिए. अगर आपको कभी भी आप इन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, तो आप एक स्माइली फेस के साथ जाइए. और बच्चे अगर कुछ फिर से समझना चाहते हैं किसी टॉपिक को, तो आप उनको वो चीज़ समझा सकते हैं. तो अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, साथ ही साथ लेसन प्लान में भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज फाइंड वे टू यूज रियल वर्ल्ड कनेक्शन आइटम एंड एक्सपीरियंस. जब कभी भी हम डील कर रहे होते किसी टॉपिक को लेकर, तो हम रियल वर्ल्ड से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें. आसपास से चीज़ों को लेके हम उनको समझा सकते हैं. नेक्स्ट इज बी प्रिपेयर्ड, बी पर्पसफुल एंड बी अटेंशनल. बी प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं. बी पर्पसफुल, हमारा उद्देश्य क्या है ना, तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए. बी इंटेंशनल, हमें इच्छा अनुसार जो हमें इच्छा है बच्चों को लेके क्या हम उसको देने वाले हैं. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए. कुछ रिसोर्सेस है जहाँ से हम कुछ लेसन प्लान बनाने के दौरान इसको ले सकते हैं, जैसे अमेजन हो गया या फिर अदर सोशल मीडिया. थैंक यू. I have the video at the end. Please take a view. Hello and welcome to Teachings in Education, Lesson Planning. What components are required in lesson planning? A teacher's lesson plan should include, at the very least, these 12 different components. The first necessary component is the title. When naming your lesson plans, begin with the course subject, grade level, and your name. The title should be clearly presented somewhere at the top of the lesson plan. It should be easy for administrators to recognize whose lesson plan it is. Next up, the date, which is more important than you actually think.
Teachers will not argue that one of the most common mistakes are using old lesson plans and forgetting to change the date. It happens to me all the time. When teachers get caught using older dates, it indicates they are not actually planning their lesson. The third component is the lesson objective. Each lesson should have a learning goal. The goal should be characterized as SMART, which means it's specific, measurable, achievable, results-focused, and time-bound. These learning goals should be posted somewhere in the class for both students and administrators to view. The next component is the standards, which is quite an important component. Lesson plans must be tied to at least one state standard. Teaching to the state standards is important because your students will eventually take standardized tests. And if you haven't covered your standards, you eventually set your students up for failure. Moving on to the fifth component, which is the actual plan for the lesson. Each lesson should have a beginning, a middle, and an ending. You should also write in the sequence of activities and events in your lesson. For example, maybe your plan begins with an anticipatory set, then a lecture, then an activity, and finishes up with an assessment. The sixth component of lesson planning is the assessment. Remember, each lesson objective with its aligned standard must be assessed for student comprehension and understanding. Now, when I say assessment, that can mean something as simple as a quick formative assessment, such as an exit ticket, or perhaps a unit assessment. The next component has been surrounded by some debate lately: homework. Let me be the first to say that homework is absolutely necessary. Add specific pages and problems for homework assignments. You know, kids spending time doing their homework isn't a bad thing. You should be assigning homework. The next part of lesson planning is to add some cross-curriculum standards. English language arts and other subject standards should be included when touched upon in a lesson. Especially look to incorporate English language arts. Think about a physics lesson on quantum mechanics and Albert Einstein. That lesson could have both history and science standards. The next component is differentiation, which great teachers actually do. You can include differentiation of instruction through content, process, and product. Also, differentiate for students with disabilities and ELL students as well. It should be noted that differentiation of instruction takes a lot of time and effort as well as planning. The 10th component is technology. Add technology skills and practices into your lesson plan if possible. Now, not all lessons you give will incorporate technology. Nevertheless, as teachers, we must prepare students for the technological world. The next component should be included is the written component. Remember, writing is a transferable skill that students need for most disciplines and need as career professionals. Even if you're teaching math, have your students write out steps to solving a problem. Place open-ended questions in your assessments. And now, we finally made it to the last component, career skills and career-ready practices. All teachers should try to instill career-ready practices that will prepare their students for careers later on in life. Education is ultimately the responsibility for preparing students for life outside of school. And click the link below for a sample of this lesson plan.